Okay, so in this part of the session, we will calculate live the dignity of a planet in a particular chart. Okay, तो जो लोग एक्सेल शीट से कर पाते हैं तो that will be very easy, so they can do it from the excel sheet. Manually भी कोई टेबल बना के नोटबुक और पेन पे करना चाहे तो they can do manually also. Okay, तो सबसे पहले first step what you can do, you can just draw this chart on your notebook, जिससे कि आपको बार बार मतलब देखना ना पड़े ये चार्ट स्क्रीन पे या कैसे भी. So everybody can draw this chart. I will also draw that. डन, बना लिया सबने. अभी what we will do, so we can, if you are using laptop, so you can just open a blank workbook, blank actual sheet. अगर ऑलरेडी उसमें कुछ लिख लिया तो that is even better. Okay, so let me share with you Excel sheet. Yes, everybody can see. ओके, तो इसमें हम लोग दो टेबल बनाएंगे एंड या सो सपोज दिस इज फॉर नेचुरल फ्रेंडशिप. Okay, so this is for natural friendship. And similarly, you can copy this and we can have a table for temporary friendship. So natural friendship I am doing because so that you can remember. एक दो बार खुद से करो तो याद हो जाता है. तो now you guys will tell कि क्या कौन कौन से प्लैनेट नेचुरली फ्रेंड्स होते हैं और कौन कौन से एनिमीज होते हैं. Okay, so okay, so first we are looking at sun. Sun to sun, nothing. Sun to moon, what we will put? We can put it as F in case of natural friend. Okay. तो एक एक करके पूछता हूँ. So sun and Mars, what is the relation? Friends. Sun and Mercury. Somebody else, Sanika ji? Neutral. Sun and Jupiter. Friends, भैया. Friends. Okay. Sun and Venus. Enemy. Sun and Saturn. Enemy. Saturn. Okay. Moon and Sun. Friends.
ओके, और किसी को कुछ डाउट भी आया ना कि अच्छा मून एंड सन फ्रेंड्स क्यों है? टेल अदिति व्हाई मून एंड सन आर फ्रेंड्स। सर किंग एंड क्वीन इसलिए मतलब वो इसलिए फ्रेंड्स हैं। क्योंकि वो किंग एंड क्वीन है ऑब्वियसली। मून एंड मार्स। मून एंड तो मार्स enemy एनिमी होंगे। न्यूट्रल मून एंड मार्स एनिमी के न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल। भैया neutral. न्यूट्रल है। मून का कोई भी एनिमी नहीं है। हम्म, यस, वेरी गुड। मून का कोई भी एनिमी नहीं है। मून एंड मरकरी। बताते जाओ जल्दी। मून एंड जुपिटर। मून एंड मर्क्यूरी फ्रेंड्स। friends भैया. ओके, नाउ मार्स एंड सन। फ्रेंड। Friends. मार्स एंड मून। एनिमी। हम्म आशीष, मार्स एंड मून। मार्स एंड मून फ्रेंड्स भैया। Friends है. फ्रेंड्स है। प्रियंका, मार्स एंड मून। फ्रेंड्स। Correct. Mars is friends to Moon, Jupiter, and Sun. Mars and Mercury. I've explained this in detail. एनिमी। Hmm. Mars and Venus. Okay, let me ask अभी जिन जिनके कैमरा बने। योगेश जी, yes. Mars and Venus. न्यूट्रल। Neutral. Okay. Mars and Saturn. Who will tell? एकता जी. जी भैया. Mars और Saturn. Saturn क्यों होंगे? Enemy. पक्का? हाँ वो वैल्यू नहीं करते तो ये देखो, एग्रेशन. this is the table. You can see the table? नहीं. जी हाँ भैया दिख रहा है. Neutral. Saturn and Mars is enemy. Okay, so this is also very tricky. आप किसी को अपना दोस्त या दुश्मन मानते हो, उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो भी आपको अपना दोस्त या दुश्मन मानते। अच्छा हाँ. सैटर्न मार्स के साथ दुश्मनी है. मार्स की सैटर्न के साथ दुश्मनी नहीं है. इट इज लाइक दिस. करेक्ट, करेक्ट। ओके, मरकरी एंड सन। उदित। यस उदित। Mercury and Sun would be good friends. ओके, Moon and Mercury enemies. Mars and Mercury enemies. Mercury, okay. Mercury and Jupiter neutral. मर्क्यूरी और मार्स भी न्यूट्रल है ना? No, Mercury and Mars would be enemies because someone will like bodybuilding where someone is very analytical. So it is quite contradictory. कोई उठा के चीज लेके जाएगा लेकिन कोई बोलेगा कि इसको इसको डिस्पेंटर करते हैं बाद में उठा के लेके जाते हैं. दिस आर क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. साहिल भैया आप हो?
Am I audible to you guys? If yes, please. Yeah, Yes, you yes. audible. Just give me 1 minute. Okay, fine. Okay, yes. So Mars is energy, aggression, and Mercury is intellect. So Mars and Mercury are enemy. Correct. And Bhaiya, Mercury and Jupiter would be neutral or friends? Mercury and Jupiter, they will be neutral. Okay. क्योंकि So गुरु की because सभी लोग इज्जत करते हैं, गुरु अच्छा, को कोई भी शत्रु गुरु को कोई भी नहीं मानता है. ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड रूल. जैसे गुरु जी है अपने, उनका कोई ऐसा करके हेटर नहीं है, कोई भी उन्हें शत्रु नहीं मानता. ऐसे प्लैनेट्स में भी गुरु यहाँ तो लोग फ्रेंड्स मानते हैं और न्यूट्रल मानते हैं. नो बडी कंसिडर जुपिटर एज एनिमी. गॉट इट? So this is how you can remember. Okay, so we are at Mercury. Okay, so we have Jupiter neutral. And what about Venus? Mercury, Yeah. Venus. What will be? Mercury, Venus would be enemies. Mercury, Venus will be enemies. Okay. कौन मानता है Mercury, Venus enemies होंगे? Friends होंगे. Sun. Yes. भैया Enemies. न्यूट्रल है क्या? हम्म. न्यूट्रल है क्या भैया? न्यूट्रल है. बताओ क्यों? क्योंकि वीनस जो है वो एंटरटेनर है एंड मर्क्यूरी इज अ मर्चेंट, तो एनिमिटी तो नहीं होगी. Mercury is a merchant. Mercury is also a prince. And Venus is an entertainer. Venus is also a लग्जरी जो होता है ना, जितनी भी इवन एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी. तो प्रिंस के लिए एंटरटेनमेंट और लग्जरी से शत्रुता क्यों होगी? इट इज अ पार्ट ऑफ हिम. क्योंकि शत्रुता जब होती है तब दोनों एकदम डिफरेंट सेपरेट एंटिटी होते हैं. ओके, सो फॉर प्रिंस इवन फॉर अ मर्चेंट लग्जरी एंड एंटरटेनमेंट इज ओके. Let's come to Jupiter. So Jupiter and Sun. What is the relation? फ्रेंड्स. Okay, Jupiter and Sun friends. Anybody else? Jupiter and Sun? Friends and Sanket? Friends. Okay. भैया जुपिटर सन आर फ्रेंड्स. Yes, correct. Jupiter के कौन कौन से फ्रेंड्स होते हैं? Sun हो गया, Moon हो गया, मून हो गया, मार्स भी भैया, and who is the enemy to Jupiter? वीनस. Saturn. Venus. Jupiter Okay. enemy would be Okay, and one more. Mercury. Saturn is neutral. Mercury. Why Mercury is enemy to Jupiter? मरकरी बिजनेस रिलेटेड है और जुपिटर को मतलब डोनेशन चाहिए. Spirituality, yes. भैया लास्ट टाइम आपने बहुत फनी एग्जांपल दिया था कि मर्क्यूरी जुपिटर डोनेशन मांगेगा मर्क्यूरी से. And Mercury will not give.
Why Mercury will not give? प्रॉफिट एंड लॉस सोचते हैं। करेक्ट, उसको अपना कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखाई देगा टेंजिबल। Mercury thinks tangible profit. Okay, very nice. Venus. enemy with sun. Venus के कौन कौन से लोग फ्रेंड्स हैं? वीनस के फ्रेंड्स भैया मून मर्क्यूरी है, वीनस के फ्रेंड्स मर्क्यूरी। So Sun and Moon are enemies to Venus. Okay, Mercury is friend to Venus, and rest others are. और कोई फ्रेंड है Venus का? Saturn. साइड भैया, आई हैव अ डाउट, कैन आई आस्क यू राइट नाउ? या तो मुझे जानना था, जैसे आपने बताया वीनस गिव्स यू लग्जरी, गिव्स यू कंफर्ट, लेकिन राजा को लग्जरी और कंफर्ट अच्छा लगता है। एंड टू दैट कॉन्ट्ररी, शनि इज अ प्लैनेट ऑफ डिस्पैशन, ऑफ वैराग्य। तो वहाँ पे लग्जरी और वहाँ पे तो ऑपोजिट होना चाहिए, लेकिन तभी तो उसमें फ्रेंड्स बता रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, तो राजा और प्रिंस में क्या अंतर है? राजा इज हियर अ टिपिकल राजा। ओके, तो टिपिकल राजा को एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी वो राजा बना है। टिपिकल राजा एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बना है। ही इज देयर टू डू वर्क, प्रोटेक्ट हिज आर्मी। सो दैट्स व्हाई वीनस उसके लिए एनिमी है। लेकिन मरकरी इज अ प्रिंस, एंड टिपिकल प्रिंस, प्रिंस मतलब क्या होता है? प्रिंस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, प्रिंस को पैसा मिल जाता है, राजा मेहनत से राजा बनता है। प्रिंस क्योंकि राजा के यहाँ पैदा हुआ है, इसलिए वो प्रिंस है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? ओके, सो दैट्स व्हाई राजा को वीनस से एनिमिटी है, लेकिन प्रिंस इज न्यूट्रल कि हाँ भाई इट इज ओके। ओके, सो वीनस इज, या वीनस का हो गया शनि देव। शनि एंड सैटर्न, दिस एवरीबॉडी कैन टेल, राइट? शनि और सूर्य। Sun. Friends. शनि और सूर्य फ्रेंड्स। Enemy, और कौन enemy है? होगा। Sun. Okay. Okay. Sun, Moon, and Mars are enemy to Saturn. And who is friend to Saturn? Mercury, Venus. Okay. And Jupiter is neutral. Okay. So this is the natural friendship. Now we will see the temporary friendship. So now we can see the Kundli, which we have drawn in our notebook. Okay. So Gaurav is the lucky person today. उसकी कुंडली का detail analysis हो रहा है. हाँ Gaurav, so you only tell. So for your sun, moon is temporary. एक एक करके चलो पूछते हैं. So we can start with Gaurav. So Gaurav, tell me, in your kundli, sun is sitting in which house and which rashi? Aditi, you can mute other people. Yeah, Gaurav, you can unmute. सन इन थर्ड हाउस। आप उसकी कुंडली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में नीचे। Good idea. You can do that. excuse me, Sahil Bhaiya, I have a question. So do let me know what can I ask you. Yeah, you can ask. तो साहिल भाई, जैसे आपने बताया कि वीनस और सैटर्न एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, तो मुझे जानना था कैसे, बिकॉज सैटर्न सिंबॉलिज्स डिस्पैशन, डिसिप्लिन,
vairagya, and where Venus is complete into luxury, pleasure, and Saturn doesn't like any pleasure because it forces a person to be more disciplined rather than going in towards pleasure. And someone who is more indulged into senses is into Venus, luxury. But on the contrary side, Saturn is more into discipline, vairagya, more about ethics. So how does this contradictory planets can be friends to each other? Yeah, so that is what I told in the start. किसी का घर कैसा है और वो इंसान कैसा है, it is a separate thing. So Venus का house, okay, Venus gives you this happiness, pleasure, and everything. But as a Venus, as an entertainer, as an artist, it is not always about artists. You have seen satsang people and all those people. So they also work very hard, isn't it? जो आर्टिस्ट होता है वो मेहनत नहीं करता है क्या? They also work actually more hard and they don't earn more money also. Nowadays, like you can see Bollywood media and all those things, but typical artist जो पहले के समय में थे, they work hard but they doesn't used to live a very lavish life. Okay, so Okay. that's why Saturn is friendly to Venus, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है कि उनको उनकी कला का कितना पैसा मिलेगा. So they are also like शनि only. It is also doing सेवा. कभी कभार उनको ज्यादा पैसा मिल गया और कभी नहीं मिला पैसा. Quite possible, right? Okay. Got it? But yeah, good question. Yes. Okay, yeah, let's come back. Gaurav, so tell me, Friend Moon is is friend or enemy? friend. Okay. Then Mars. Gaurav, keep your unmute. ये पूरा रो Friend. yeah. Enemy, same house. Mercury, friend. Friend. Jupiter. Enemy. Jupiter, where is Jupiter? 1, 2, Seven. 3. It is fourth. Jupiter is enemy. Venus, Venus is friend. Friend. Saturn is enemy. Okay, clear? अभी कौन नए लोग हैं? Let us ask new people. Aditi और Saturn? प्रियंका. हाँ, Saturn सूर्य Saturn के should be साथ ही friend, बैठा ना? है ना, तो नहीं एक ही हाउस में बैठे हैं ना सूर्य और शनि. अच्छा अच्छा. Yeah, so Ashish, हाँ. that's Ashish will tell about moon and sun. Moon and sun. Okay. Moon is sitting it is friend. Moon Moon with and moon, Moon with moon with Mars. Mars. A friend. Mercury also enemy. Jupiter is 2, 3. Jupiter is friend. Venus is 1, 2 friend. Okay. And Saturn is also friend. Okay, good. Mars. So Mars को कौन बताएगा? एकता. एकता, you can tell. कोशिश करती हूँ. Yeah. Mars and Sun. Enemy. Mars and Moon. Friends. भाई इसमें तो मार्स और सन एक साथ ही बैठे हुए हैं. हाँ, तो एनिमी है ना, इसलिए एक भाव में बैठा प्लेनेट एनिमी होता है. Mars and Mercury, friends. Mars and Jupiter. Mars and Jupiter एकता. जुपिटर नहीं बता पाऊंगी भैया. ये देखो ना, मार्स एक हाउस में मून है, सेकंड में नेपच्यून, थर्ड में राहु, फोर्थ में आ रहा है, तो फोर्थ में एनिमी हो गया ना. 3 हाउस आगे और 3 हाउस पीछे, मतलब फ्रेंड, बाकी सब एनिमी. भैया ये जो आप हाउसेस गिन रहे हैं ना, जैसे ये मार्स इस तरफ बैठा है 11 नंबर में एक बार, तो ये पीछे कैसे, ये मतलब 1 2 3 कैसे आप इसको पीछे, ये जिसमें मर्क्यूरी है अरे
मार्स के बगल में जितने भी हाउस है, मार्स के आगे 1 2 3, पीछे 1 2 3, तो इन तीनों में जो भी बैठे हैं आगे और पीछे वो फ्रेंड्स है, बाकी सब एनिमी है। सिंपल। तो राहु जुपिटर नहीं आ पाया इसमें, तो इसलिए एनिमी हो गया, बाकी सब फ्रेंड्स हो गए। और सूर्य और शनि क्योंकि उसके साथ ही बैठे वो एनिमी हो गए। आया समझ में अब? साहिल भैया एक डाउट है। यस आदित्य। अदिति बोल रहे हो। हम्म। साहिल भैया मैं पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया 3 हाउस आगे और 3 हाउस पीछे ना, तो वो इसमें जो आपने बताया मर्क्यूरी से 3 हाउस पीछे तो समझ में आ गया, तो जुपिटर एनिमी हो गया। और मर्क्यूरी से 3 हाउस आगे तो मर्क्यूरी इंक्लूडेड है ना, मतलब मर्क्यूरी का हाउस से 1 2 3 नहीं, ये रहा। मरकरी इंक्लूडेड नहीं है, मरकरी के आगे के 3 हाउस। ओके, जो श्लोका था ना उसमें लिखा था सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम योर हाउस, तो वो हाउस के अलावा वो हाउस इंक्लूडेड नहीं है। ओके, और तो अभी हम उस हिसाब मंगल को से तो देख फिर रहे हैं, जुपिटर मरकरी नहीं। मंगल, वी आर लुकिंग एट भैया फिर मार्स। उस हिसाब से, हाँ हाँ उस हिसाब से भैया फिर जुपिटर तो फ्रेंड होना चाहिए ना, क्योंकि अगर मर्क्यूरी इंक्लूडेड नहीं है तो हाँ, तो फिर मरकरी 3 का हाउस में फ्रेंड तो है, तो मैंने मना कहा कि अब मरकरी का फ्रेंड लिख देता हूँ मैं अभी से ही, बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट मार्स नो। ओ हाँ 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 सॉरी भैया। We are on this road. Okay, so let's quickly finish this. Venus will be friend and Saturn will be भैया एक task. मार्स वुड बी द सेम एज सन एंड सैटर्न, उनकी टेम्पररी फ्रेंडशिप्स तो सेम ही होंगी ना, सेम हाउस में बैठे। हाँ, तो सन और सैटर्न एनिमी ऑब्वियसली। ठीक है, तो अभी आदित्य यू टेल मरकरी का। सन विल बी भैया सन फ्रेंड है। मून। मून, मून तो एनिमी है भैया, सेम हाउस में है ना। मार्स फ्रेंड है। मर्क्यूरी अच्छा मर्क्यूरी तो नहीं, जुपिटर भी फ्रेंड है भैया। एंड वीनस, वीनस भी फ्रेंड है। एंड सैटर्न, सैटर्न भी फ्रेंड है भैया। वेरी नाइस। ओके, नाउ हु विल टेल फॉर जुपिटर? अनीता जी आप बताएंगे जुपिटर का गुरु का कौन फ्रेंड है कौन एनिमी? नहीं, इतना क्लियर नहीं बता पाऊंगी भैया, अभी कंफ्यूजन है। हाँ, तो देखो ना, ये जस्ट देखो, जुपिटर ये रहा। यस। ठीक है, ये है जुपिटर। हम्म। तो टेम्पररी फ्रेंडशिप में हम देखते हैं इसके 3 हाउस, 1 2 3, 3 हाउस आगे और 3 हाउस पीछे। तो 3 हाउस आगे और 3 हाउस पीछे कोई भी ग्रह बैठता है वो टेम्पररी फ्रेंड बन जाता है। तो जुपिटर के 3 हाउस आगे कौन कौन है? राहु है, मून है, मरकरी है, और हाँ। पीछे कोई नहीं है। तो राहु मून एंड मरकरी उसके फ्रेंड होंगे और बाकी सब एनिमी हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, 3 हाउस आगे 3 हाउस पीछे कोई भी है तो वो फ्रेंड है, बाकी सब एनिमी। ठीक है, तो क्या होगा इधर? जुपिटर का सन होगा एनिमी। सीधे लिख देते हैं ना, मरकरी मून एंड राहु। मरकरी एंड मून आर फ्रेंड, रेस्ट आर एनिमी। मरकरी इज फ्रेंड, मून इज फ्रेंड, मरकरी इज फ्रेंड, रेस्ट आर एनिमी। ओके, वीनस, वीनस का कौन बताएगा? सनी का, कैन यू टेल? संदीप जी, संदीप गावड़े जी, आप बता पाएंगे शुक्र का कौन सा ग्रह फ्रेंड है कौन सा एनिमी है? हाँ, शुक्र का फ्रेंड शनि, सूर्य और मंगल। और एनिमी कौन है? और गुरु ही, जुपिटर केवल। हाँ, ओके, क्योंकि राहु केतु को तो हम देख ही नहीं रहे हैं अभी। तो वीनस के लिए जुपिटर इज द एनिमी एंड रेस्ट ऑल आर फ्रेंड्स। ओके, और कौन बचा है? यस, किरेन जी, किरेन जी कैन यू टेल?
शनि देव सैटर्न के लिए कौन कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी, नहीं, सन इज एनिमी and Saturn is enemy, or sorry, and Mars is enemy, ओके and Mercury, Moon, Rahu are friends, ओके एंड जुपिटर and Jupiter is enemy. correct. Okay, so Saturn, Sun is enemy, Mars is enemy, and Jupiter is enemy, Venus is friend. Okay, so this is our temporary friendship table. Okay, now let's make a five-fold friendship table. Five-fold friendship table में हमारा क्या था? Enemy, great enemy, friend, great friend. So table बनाने से अच्छा है we can see the different planets. Okay, तो हमने जुपिटर तो ऑलरेडी देख लिया, तो जुपिटर किसके हैं? we can just write planets और वो किसके हाउस में है. Okay, as per the five-fold friendship. और shall we make table बना ले क्या? ठीक है, let's make a table. उसके बाद और भी आसान हो जाएगा. भैया भैया वो 5-fold फ्रेंडशिप कैलकुलेट करने के लिए एक चीज कर सकते हैं, एनिमी फ्रेंड्स को 0101 कर सकते हैं, तो जब आप ऐड करोगे ना, तो जैसे 2 आ गया तो ग्रेट फ्रेंड्स हो गया, एकदम 0 हो गया तो ग्रेट एनिमीज हो गया. ओके, तो दिस आई थिंक इसको डिलीट क्यों नहीं हो रहा? ओके, सो यू आर सेइंग कि एनिमी फ्रेंड को कर देते 1 और न्यूट्रल को क्या करेंगे फिर? 0. तो ठीक है, तो संकेत यू डू ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑन दिस और एक्सेल शीट में कोई फॉर्मूला बना के लाओ, ठीक है, सो दैट वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. आई हैड वन शीट, अभी आई हैव टू फाइंड इट आउट, बट सो दैट नेचुरल फ्रेंडशिप तो कांस्टेंट ही रहेगा. टेम्पररी फ्रेंडशिप वी कैन राइट इट डाउन एंड ऑटोमेटिकली 5-fold फ्रेंडशिप आ जाए उसकी. सो वी हैव टू क्रिएट अ फॉर्मूला. यू कैन क्रिएट अ फॉर्मूला. एनीबडी एल्स लाइक आशीष, यू कैन आल्सो वर्क ऑन इट. इस हफ्ते नहीं तो नेक्स्ट वीक में भी, अगले हफ्ते तक, whenever you find time you can create formula. तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं? सन एंड मून. ओके, सो नेचुरल फ्रेंडशिप एफ, तो ये बन गए ग्रेट फ्रेंड्स. गॉट इट? सन एंड मार्स, एक एक करके पूछते हैं. सनिका जी, सन एंड मार्स ये क्या होंगे? एफ प्लस ई. एफ प्लस ई इज फ्रेंड एंड एनिमी. फ्रेंड होगा ना भैया? फ्रेंड Neutral. प्लस एनिमी इक्वल टू न्यूट्रल. ओके, तो संकेत व्हाट वी कैन डू, या वी कैन पुट एनिमी -1, न्यूट्रल 0 एंड फ्रेंडशिप 1. मैं वही बोलने वाला था, तो वो परम्यूटेशन में भी सही बैठ रहा है. हाँ, करेक्ट. सो मर्क्यूरी, तो सन एंड मर्करी आर न्यूट्रल एंड
temporary में Sun and Mercury are friend. So overall it will be Sandeep ji, Sun and Mercury overall. Friend. Friend. Sun and Jupiter, Sandeep ji again. And Jupiter friend. नहीं इधर enemy है ना Sun and अच्छा Jupiter. enemy है neutral sorry. Sun and Venus. Enemy friend neutral. Yes. Sun and Saturn. Great enemy. Great enemy. Okay. Okay, चलो एक एक से करवाते. प्रियंका can answer for moon. Okay, so Priyanka, moon and sun. Great friend. Okay. Moon and Mars. Neutral and friend. Friend. Okay. Moon and Mercury. Friend and enemy. Neutral. Okay. Moon and Moon and Jupiter. Jupiter. Neutral and friend. So friend. Okay. Moon and Venus. Friend. Moon and Saturn. Friend. Correct. Next is Ashish. Mars and Sun. Mars and Sun friend and enemy. Friend and enemy is neutral. Correct. Mars and Moon. Friend and friend is great friend. Okay. Mars and Mercury. Mars and Mercury. Here we are having Mars. Okay, Mars and Mercury enemy and friend. Enemy and friend is neutral. Mars and Jupiter. Mars and Jupiter is friend and enemy. Friend and enemy is neutral. Mars and Venus. Mars and Venus neutral and friend. Neutral and friend is friend. Mars and Saturn. Neutral and enemy. Neutral and enemy is enemy. Correct. Manish ji, let's. Manish ji, you are there? Yes, yes. Okay, तो मरकरी का आप बताइए. Mercury and Sun. So it's a great friend. Okay. Mercury and Moon. Great enemy. Okay. Mercury and Mars. Neutral. Mercury and Jupiter. All three are now neutral plus friend. So it's going to be friend. Correct. Okay. Aditi. Jupiter and Sun. Yeah, friend and enemy is neutral. Jupiter Moon. Jupiter moon. Friend and friend is great friend. Okay. Jupiter Jupiter and Mars. Mars. Friend and enemy is neutral. Jupiter Mercury. Jupiter Mercury enemy and friend is neutral. Jupiter Venus. Jupiter Venus enemy and enemy is great enemy. Okay. And Jupiter Saturn. Neutral. Jupiter Saturn, here it is enemy and here it is neutral. So it becomes enemy. Okay, who else? Arun ji, Sanjay. Arun ji और संजय को तो आते ही होगा.
Hirenji. Yeah, Hirenji, you can tell. Yeah, enemy, friend, neutral. Again, enemy, friend, neutral. Neutral, friend, friend. Okay. Next, Friend, Venus, great friend. Mercury. Great friend. Okay. Then Saturn is friend, friend, great friend. Saturn is friend, friend, great friend. Okay. Last, Shani का कौन बताएगा? Sanjay, okay, you can tell quickly. Great enemy, neutral, great enemy, great friend, enemy, great friend. उधर की बॉल अपनी डी एडिक्शन दी भैया मैंने फॉर्मूलाज डेवलप कर दिए एग्जैक्टली यही आ रहे हैं Perfect. So let us complete this where we can take your sheet. Okay, so now the game begins. So abhi we have the table of actual friendship of the planet. So this is what we will consider. We have to consider for finding the strength of the planet. Finally, one question. Mercury has only one natural friend. Mercury has only one natural friend. Mercury has Sun and Venus, two natural friends, right? Mercury has, Mercury has two natural friends, Sun and Venus. किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मनीष है. हाँ मनीष जी. मरकरी का ये सन एंड वीनस दो होंगे. चेंज करना होगा. हाँ तो Mercury Venus enemy and Mercury Venus friend. So enemy plus friend is neutral. So natural table में Mercury Venus is marked as Mercury and Venus are friends, sorry. And Mercury Venus are friend. So Mercury and Venus here will become great friends. ठीक है अभी करेक्ट है मनीष जी करेक्ट नाउ सही है. And just want to validate Mercury's enemy with both Moon and Mars. Mercury is enemy with both. Mercury is enemy with Moon, not with Mars. Mercury is neutral with Mars. Okay, Mercury का किसने बताया था? Mercury में we have done two mistakes. Mercury is enemy with only Moon. Mercury is not enemy with Mars. Great, thank you so much, Manish ji. Yes. Sanjay, we expect this kind of detail orientation from you also. You are from IIT Kharagpur mathematics department, no? Yeah, Mercury and Mars should be enemy, right? Mercury and Mars. Mercury and Mars friend है ना? Mercury is sorry neutral है Mercury and Mars. Mercury is friend with Sun and Venus. नहीं भैया आई थिंक वो टोटल उसकी उनकी बात टोटल का बोल रहा है ना Mercury फ्रेंड्स आ रहा है. F. It will be F, correct. Okay, so now we have reached the correct table. So generally, see, we don't calculate it generally. All the mobile application and all the good softwares already have this five-fold friendship. लेकिन still, you should know कि कहाँ से आ कैसे रही है ये data, okay? Because it will help you later on in making prediction. So that is why it becomes very important, and I made it do. मतलब आपको इतना टाइम इस पे इसलिए स्पेंड करवा जिससे कि you should understand properly कि कैसे relationship रहता है. Okay, so now let's maybe Sanjay can start. So now we can write down the planet.
एंड वी कैन टेल कि उनकी डिग्निटी क्या है, वो कौन से डिग्निटी में है. राइट इट डाउन ओवर हियर. ओके, सो या रंजय, तो सन की Sun डिग्निटी क्या is है? great enemy. ओके, तो सन कौन सी, यू टेल इट एकदम प्रोसेस Sat वाइज, सो दैट okay, other Sun can is in also. the house of Saturn, and with Saturn Why it it is is in the house of Saturn? It is in Aquarius. Aquarius. Yeah. So Yes. therefore it is great enemy. Okay, so how you have find out Sun and Saturn are great enemy? The Sun is in the sign of house of great enemy. Okay. Okay. Now who will tell किसकी कुंडली है ये? Let others also give the chance. Ashish, are you there? Yes, yes. मूल कौन सी राशि में है और उसके साथ उसका कैसा रिलेशनशिप है? मून आपका इस पे सेकंड हाउस में है। तो टेंथ टेंथ नंबर एक्वेरियस। तो 10th is Capricorn. ओके, टेंथ इज कैप्रिकॉन, या टेंथ इज कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन इज इन कैप्रिकॉन इन सनी, आई मीन सनी इन द सेंस सैटर्न। सो इट इज फ्रेंड। Okay, so Moon and Saturn are friends. Okay, so Moon is okay. Moon is happy. So basically, we are finding out कि कौन सा planet कितना खुश है. Dignity means किस हाउस में है और कितना खुश है. तो आप फ्रेंड के यहाँ जाओगे या ग्रेट फ्रेंड के यहाँ जाओगे तो यू विल फील हैप्पी, राइट? सो Moon is in the friend's house. Next, सनिका जी, you want to tell? मंगल किसके घर में है? मंगल इधर थर्ड हाउस में, बट 11th राशि मतलब कुंभ राशि शनि की राशि में है। तो मंगल एंड शनि एनिमी। करेक्ट. एनिमी। मंगल भी अपना शत्रु के घर में है. मंगल इज ऑल्सो नॉट दैट कंफर्टेबल. ओके, नाउ गौरव, यू योरसेल्फ टेल, मरकरी कौन सी राशि में है? मरकरी कॉप्रिकॉन में, मकर राशि में। मरकरी इज इन कैप्रिकॉर्न, इट इज इन मकर राशि. ओके, तो मरकरी शनि की राशि है, राइट? शनि के साथ कैसा रिलेशन है मरकरी का? फ्रेंड. ओके, मरकरी इज हैप्पी, मरकरी इज स्ट्रॉन्ग. ओके, संदीप जी, जुपिटर के बारे में बताएंगे. गुरु कौन सी राशि में है? गुरु 7 नंबर तुला राशि, विनस शुक्र। तो ग्रेट फ्रेंड है। गुरु शुक्र की राशि में है ना? हाँ, विनस के। तो शुक्र कौन है? अच्छा, एनिमी। ग्रेट है. द ग्रेट एनिमी। प्रियंका, यस. वीनस, हाउ, वेयर वीनस इज प्लेस्ड? वीनस स्पाइसेस में है, जुपिटर की राशि में। तो वीनस एंड जुपिटर एनिमी। ओके. Yeah, I think we can highlight also all this. Okay. Saturn का कौन बताएगा? अनीता जी, आप बताइए सैटर्न का. अनीता जी is not. Udit, you want to tell? या अनीता जी, शनि कौन सी राशि में है इस कुंडली में? कुंभ राशि में। और कुंभ राशि किसकी होती है? शनि की. तो शनि अपनी खुद की राशि में. तो शनि की खुद की राशि में, और शनि का मूल त्रिकोण क्या था? नाउ वी कैन सी द नोट्स ऑफ प्रीवियस क्लास. What was the मूल त्रिकोण ऑफ शनि?
0 to 20 degree Aquarius. Okay, so here we need to find out the degree also. Okay, so we can write it as Mooltrikona. Yes. So MT. E is for exaltation. Sorry, exaltation को फिर EX लिखेंगे. E is for enemy. We can write E, or E is sufficient. F is for friend, and great friend, great enemy, you know. Okay, तो सन किसकी राशि में था? सैटर्न की. मार्स किसकी राशि में था? सैटर्न की. वीनस किसकी राशि में था? Pisces की. Mercury. Mercury is also there in Saturn राशि. भैया शुक्र एग्जॉल्टेड आएगा ना खुद की राशि में. Venus is exalted, correct. EX. Okay. So yeah, so you can tell now कि कौन सा planet strong है इस कुंडली में सबसे ज्यादा? शुक्र. Sun. Venus. Venus is the most exalted. Exalted at No? 27 degrees, right? It is only 6 Yeah, degrees. so still we haven't copy pasted the degrees, but still for the time being we can. तब भी मतलब Venus exalted राशि में तो है ना, तो it will be higher than great friend also. Okay. Okay. Yeah. It won't be at the greatest exaltation, और क्योंकि Venus enemy राशि में है तो उसका exaltation सी. So बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारी कुंडली में जुपिटर उठता है, जुपिटर उठता है. ओके, लेकिन you can see here also कि Venus is in Jupiter and Jupiter is five-fold friendship with enemy है. तो इसका मतलब ये है कि ये Venus exalted है, लेकिन क्योंकि enemy की राशि में है तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा.